First, welcome you all in the 6th episode of Fun Maths with VB Kulkarni. Suppose if I ask you children, what is the value of 2 raised to 0? You all will raise your hands. You will be top of there. You will be raising your hands at the top, and you will be shouting at the top of your voice, "Sir, it is 1, sir." Suppose if I ask you how, then you will say, "Sir, our teacher has told that a raised to 0 is equal to always 1. So whatever value you put for a here, that will be equal to 1, sir. Here a is 2, so 2 raised to 0 is 1. Then again if I ask you how a raised to 0 is 1, then some children may say, "Sir, it is very simple, sir. See like this. A to the power 6 is there, suppose, and if a to the power 6 is there, sir, then we write a into a into a into a into a 6 times, sir. And see here, a into a into a into a 6 times we will write it, sir, and then each time the numerator and denominator will cancel, sir, and finally the answer that we get is 1, sir. Here we are getting 1, sir. Then if we apply the laws of indices, sir, then a raised to m by a raised to n is equal to a raised to m minus n, sir. So this is a raised to 6 minus 6 is equal to 1. That means a raised to 0 is equal to 1. यही आप कहना चाहते थे ना, यही आप कहना चाहते थे। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपको एक अलग तरीके से बताऊं कि 2 raised to 0 is equal to 1 कैसे आता है, तो क्या आप जानना चाहोगे? कहो ऐसा, नो, जानना चाहोगे? ओके, तो हम आपको बताएंगे। देखिए कैसे इसको कर सकते हैं। आप जानते हो बच्चों कि 2 to the power 2 raised to 8 अगर मैं करूं तो कितना होता है? आप देखिए, 2 to the power 8, 2 into 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 into 2 होगा 64, 64 into 2 होगा 128, और 128 into 2 होगा 256। सर बहुत सिंपल है, 2 raised to 8 is how much? 256। ये तो हम जानते हैं सर, मैं कोई नई बात नहीं बताना चाहता हूं, जो आप जानते हो उसी से मैं आपको इसको प्रूव करना चाहता हूं। बच्चों अगर 2 raised to 7 ले लूं तो 2 raised to 7 ले लूं तो कितना होगा? सर बहुत सिंपल है सर, 128 होगा। 2 raised to 7 ले लो तो कितना होगा? सर 128 होगा। सर अगर 2 raised to 6 ले लूं तो कितना होगा? सर बहुत सिंपल है सर, 64 होगा। फिर अगर मैं 2 raised to 5 ले लूं तो सर वेरी सिंपल, इट इज सर 32। हम जानते हैं सर, वी नो इट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। इफ आई आस्क यू 2 raised to 4 कितना होगा? सर वेरी सिंपल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। वेरी गुड। देन इफ आई आस्क यू व्हाट इज 2 raised to 3, you will say sir very simple sir, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। again you know what is my next question, 2 square कितना होगा? सर 4। then I'll ask 2 raised to 1 कितना होगा? then you will say very simple sir, 2। हाँ, here I am coming to my question। see here, 8 7 6 5 4 3 2 1। next question will be 2 raised to 0। 8 7 6 5 4 3 2 1 0। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो आप, 256 128 64, इसका आधा ये, इसका आधा ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, हाफ ऑफ इट। 256 हाफ इज 128, 64 हाफ, 128 हाफ है 64, 32 का हाफ है 16, 16 का हाफ है 8, 8 का हाफ है 4, 4 का हाफ है 2, 2 का हाफ 1। तो देखिए आप, इस तरह से आप एक अलग अंदाज में
इस तरह से आप एक अलग अंदाज में ये बता सकते हो कि 2 to the power 0 is 1. So this is the proof of 2 to the power 0 in a pattern method. So every time what is happening is यहाँ पर the power is decreasing by 1 and the right side is decreasing by half. So finally when you come to 0, it will become 1. So this is how you can prove that 2 raised to 0 is 1.